ओके, नेटवर्क गया था, फिर से ज्वाइन हो गए हम लोग। कम टू द पॉइंट, रिकॉर्डिंग आंसर है। तो करेंसी में पब्लिक होने के बाद द सेकंड पॉइंट यू आर स्टडी M2 M2 मनी सप्लाई सेकंड रिजल्ट। अब M2 के ऊपर से क्या बोला हुआ देखो, M2 इज स्टडी is a broad concept money supply in the in India than M1. M1 से broad concept है, क्या concept है? In additional, three are the item with M1. The concept money supply to is including saving deposit with post office and saving. यानी पहले तो उसमें M2 is equal to M1 plus saving with पोस्ट ऑफिस। M1 में क्या क्या है, C प्लस D प्लस OD, अब उसके साथ सेविंग भी जब पोस्ट ऑफिस होगा इट्स कॉल्ड M2। ओके, एंड हियर द M2 इज रिगार्डिंग टू, मतलब आवाज आ रही है ना मेरी? However, there is the deposit reserve bank of India including the following items. First, deposit with institutions such as UTI, IDBI, यानी financial institute. Okay. Then next, demand deposit with foreign central bank. DD बनाना है foreign central bank के साथ, और IFM World Bank के साथ अगर कोई deposit होगा या transaction होगी, तो it is included in M2. Money supply is the broad M2. These are the reasons why money supply M2 is with the distribution M1. Then saving deposit with post office, saving bank are not liquidity demand deposit with commercial and converted paper bank as they are not be checkable account. However, the saving deposit with post office are necessary. Then M3, study of M3. M3 is equal to M1. M3 is equal to M1 plus time deposit with bank. M1 plus time deposit with bank. Time deposit, it means RD and TD. It is generally through the time deposit savings store. Value of representative saving of the people are not liquidity, can be easily obtained again these the time deposit. They can be used in for the necessary transaction purpose. It may be the note recently M3 has become the popular in nature because time deposit में blocker ज़्यादा होता है, FD रहे या RD रहे तो amount ज़्यादा टाइम पे सेव रहती है, उसको आजकल ज़्यादा माना जाता है। Okay, then the last point M4. और M4 में उसने इन शॉर्ट बोला हुआ है the major M4 of money supply including not only all the item M3 described above the but also the total deposit with post office saving formula. It means M4 is equal to M1 plus M2 plus M3. यानी ये all deposit concept यूज करने वाला money supply pattern रहेगा, it is M4. Okay. In that the supply of money in Indian expenses. The next point is ये supply of money के pattern में first M1 में क्या होने वाला है, narrow concept है, करेंसी सप्लाई के लिए DD एज ऑर्डिनरी डिपॉजिट। देन M2 में M1 के साथ और उसके साथ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, इसके साथ RD और FD आ जाएगा। M4 में M1 M2 M3 यानी ऊपर के सब यूज होंगे। ये था मनी सप्लाई के कंपोनेंट। अब द मेन पॉइंट इज कि मनी सप्लाई और उसका एक्सपेंडिचर इन पब्लिक। द नेक्स्ट पॉइंट इज the supply of money the Indian Express the Indian Express experience. Money is generally used is a mean of the payment of fairly supply, यानी जो सप्लाई होता है उसका पेमेंट करने के लिए मनी यूज की जाती है। दैट्स द मेन पॉइंट।
Settlement of debt, the term supply of money means the total stock of domestic money held by the public. The term public refers here the individual, business firm, opportunity in economy. However, the executive of central government and public government are included. The cash balance held by the central government and state government with the central bank or with the treasuries of the cash reserve owned by the commercial bank are not being considered under the money supply. Money supply is stock as well as the flow of concern. When money supply is viewed at the time of stock, money held by public at the moment time, it's referred to the currency money. If that is currency note and coin issued by the central bank or the central government, circular of money, demand deposit, withdraw by check with the commercial bank made by the public for supply money concern. M1, M2, M3, and M4 are the part of money supply component. Okay. Then the factor determining of money supply. Factor determining the money supply. There are two theory of determining in money supply. According to the first view of the money supply is determined executing the central bank. The second view of it that money supply is determined and endogenous by change in the economic activity. The determined money supply is depend on money based and cash based. The first is monetary base. First point is monetary base. Monetary of the monetary base is the significant determinant of size of money, supply failures, directors, and relation to change in money base. Monetary base refers to the supply of funds available for the either as cash reserve for the central bank. Monetary base change due to the public government and is also influenced by the value of money. Then money multiplier. Second is money multiplier. I teach you in last lecture. What is multiplier? The money multiplier has positive inflation upon the money. In increasing the size of money will increase by the money supply of vice versa. जितनी money supply बढ़ेगी उतना ही rate of commodity बढ़ेगा. Rate of commodity जितना बढ़ेगा उतना inflation बढ़ेगा. That reserve ratio let's talking about the reserve ratio. Reserve ratio is also the important determination of money supply. The smaller cash reserve ratio enables crediting expenses in credit by the bank. This increases the money supply and vice versa. Reserve ratio is often broken down into the component parts. Exists reserve ratio, which is the ratio of excess reserve to the total bank, and reserve ratio is earning ratio demand of money. ये फॉर्मूला इसका इसको फॉलो करना है. Then the current ratio currency ratio this means the change of currency amount in the fluctuation of ratio of change value of currency. Okay, currency ratio is the behavior of ratio representing the ratio currency demand to the demand deposit. The efficiency of currency ratio on money multiplier cannot be clear regarding because entire both numerator and denominator is money multiplier is there. Then confidence in bank money time deposit ratio.
time deposit ratio. The next point, okay, time deposit ratio is the study regarding to the time deposit, which is the representative, which is represent the ratio of time deposit to demand deposit behavior, permanent having negative effects of money multiplier and thus of money supply. Okay, then value of money. The next point is value of money. Okay, the value of money is the main point here. The value of money in terms of goods and services has positive inflation, money based and monetary based, and this inflation is valued your currency value. Okay. The next point is compulsion for all our finance student, rate of interest. Rate of interest, कितना interest rate होगा वो? Interest has been the positive effect of monetary policy. It has been money supply. The rise of interest rate will reduce the use of ratio. Okay. Then monetary policy and situation. ये पॉइंट को जरा ब्रीफली देखेंगे फिर से. फर्स्ट फैक्टर डिटरमाइन करना है तो मॉनेटरी बेस. कि तुम्हारी मॉनेटरी बेस कैसा है. मैंने फर्स्ट ईयर में जब तुम्हें बताया था तो मैंने एक सेंटेंस बोला था ऐसे बेसिकली कि किसी करेंसी या कंट्री को डिटरमाइन करना है कि वो कितना डेवलप है तो उसकी एक आइडिया होती है. एंड द आइडिया इज कि हाउ मच डेवलप दिस कंट्री. और उसको डेवलपमेंट को अगर चेक करना है तो पता करो कि हायर रेट करेंसी नोट उनका क्या है. फॉर एग्जांपल इंडिया का 2000 रुपीज द बिगेस्ट नोट है, राइट, एज कंपेयर्ड टू द कुवैत 20 रुपीज द बिगर नोट. उसके ऊपर कोई नोट नहीं है. अपने इधर 20 रुपए की नोट तो बच्चे लेके घूमते हैं. तो ये जो चेंज है, ये चेंज है वो मॉनेटरी बेस होता है कि तुम्हारा मॉनेटरी बेस कितना है. एंड जितना हायर मॉनेटरी बेस रहेगा, लो नोट रहेगी, यू हायर डेवलप, बिकॉज तुम्हारे पास जो डेवलपमेंट पॉलिसी है इट्स गुड कि तुम कम पैसों में ज्यादा कवर अप कर रहे हो. तुम्हारी रेटिंग पॉलिसी, सप्लाई ऑफ मनी पैटर्न आर बेस्ट. और जितना सप्लाई ऑफ पैटर्न एंड डिमांड ऑफ पैटर्न इज बेस्ट रहेगा उतना इन्फ्लेशन डल रहेगा. और जितना इन्फ्लेशन डल रहेगा उतनी छोटी नोट बड़ा काम कर देती है. अपने यहाँ इन्फ्लेशन हाई है, रेट ऑफ गुड्स आर हाई, तो 2000 की नोट तो 2 मिनट में खत्म हो जाती है. और हो सके और इन्फ्लेशन और हाई हो गया तो मे बी 5000 की भी इशू हो जाएंगे. एंड जितनी बड़ी नोट उतना डर वैल्यू ऑफ करेंसी. ओके. देन द मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर इट मींस जो बिजनेसमैन होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हुए, मल्टीपल इन्वेस्टर्स देयर एंड दिस इन्वेस्टर इज इन्वेस्ट more money and fall of money. Okay. Then this is reserve ratio. Reserve ratio, reserve with bank and reserve with RBI or World Bank. She's done. Okay. Reserve ratio. Okay. Then currency ratio. Currency ratio, the current ratio, which is followed by funny exchange followed by fluctuation. Money exchange fluctuation में two types of ratio होता है. एक demand ratio and fluctuation ratio. अब fluctuation ratio is the current policy कि उधर time to time वो ratio per day change होते रहता है. Maybe the rate of currency are higher in denoyer per day as compared to उससे पहले 90s से पहले क्या था, एक fixed rate रहता था, उस rate पे exchange होता था for annum के लिए. annum के बाद फिर से उसको pre-calculate करके चेंज किया जाता है. देन टाइम डिपॉजिट रेशियो. अब अगर टाइम डिपॉजिट रेशियो की बात करेंगे तो टाइम डिपॉजिट के ऊपर मैंने कौन कौन से टाइम डिपॉजिट बोला हो, आरडी, एफडी एंड अदर सेविंग्स जो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, जिनके यहाँ मनी ब्लॉक होती है. अब इनकी ब्लॉकिंग के सिस्टम को देखेंगे. अगर इनकी ब्लॉकिंग के सिस्टम को देखेंगे तो यहाँ ब्लॉक कौन सा है, तो सबसे बड़ा ब्लॉक है यहाँ पे कि ये टाइम डिपॉजिट के अंडर गए और ये टाइम डिपॉजिट ब्लॉक दायर होता है. अब ये जो ब्लॉक जनरेट हो रहा है, या ब्लॉक किसका है, तो मनी का ब्लॉक है. हमें जो चीज लेनी है ऑन टाइम हम खरीद नहीं सकते. क्यों खरीद नहीं सकते? बिकॉज ये मनी ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है इफेक्टेड ऑन अस. और क्या इफेक्ट करेगा कि ऑन टाइम वो गुड्स नहीं मिलेंगे तो जो वैल्यू ऑफ गुड्स थे वो डल हो जाएंगे और उसका जो डिमांड है वो डल हो जाएगा. देन मनी आल्सो वैल्यू इज डल. ओके. देन वैल्यू ऑफ मनी.
अब वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि मनी की वैल्यू कब होती है जब उस गुड्स की नेसेसरीज होती है। अब नेसेसरी गुड्स ऑन टाइम मिल रहे हैं तो उस मनी की वैल्यू होती है। अब उसी टाइम पे अगर सप्लाई ऑफ मनी नहीं होगा या शॉर्टेज ऑफ मनी या लोन जनरेट हो रहे इट इज इफेक्टेड ऑन यू। Then the next point is ratio of rate of interest. The rate of interest की अगर डिस्कस करेंगे तो rate of interest it is depend on the saving and also loan making. लोन के ऊपर जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इट इज इफेक्टेड ऑन यू एंड आल्सो लोन के ऊपर जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना हायर इफेक्टेड ऑन यू। क्यों इफेक्टेड होगा कि जितना हाई रेट होगा उतनी बड़ी इंस्टॉलमेंट रहेगी, जितना लोन के ऊपर कम इंस्टॉलमेंट रहेगा उतनी कम इंस्टॉलमेंट रहेगी। एज कंपेयर टू द नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि एफडी या सेविंग के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इट इज इफेक्टेड ऑन यू कि जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उतना रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न कम रहेगा और जितना रेट ऑफ रिटर्न कम रहेगा उतनी वैल्यू कम रहेगी। ओके, इसी पॉइंट्स के ऊपर किसी को कुछ डाउट हो तो जरा पूछ लेना वन बाय वन। यस सिनिंग, एनी डाउट? हॅलो साक्षी मोहिते, समजलंय का आजचं लेक्चर? आपण सेकंड मॉड्यूलचं फर्स्ट चॅप्टर चालू केलंय मनी सप्लाय। साक्षी हॅलो सर. हा विशाल काही बोलायचंय का सर मनी मल्टीप्लायर जरा बोल सर मनी मल्टीप्लायर जरा एकदा सांगा ना. मनी मल्टीप्लायर वेट मनी मल्टीप्लायर द पर्सन यू मल्टीप्लाय योर मनी। ह्याच्यामध्ये कसं होतं की एक पर्सन आहे इट मीन्स द शेअर मार्केटमध्ये जो प्ले खेळतो तो शेअर मार्केटमध्ये जो काम करतो त्याच्यासाठी पॉलिसी कशी असते की त्याने पर डे शेअर मार्केटमध्ये पैसा लावला पाहिजे आणि जो लावलेला पैसा आहे तो डबल होत गेला पाहिजे, पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आले पाहिजे। आता हे जे पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आहे ते त्याला जास्तच इन्व्हेस्ट करायला सांगतात, पण जर आपण इकॉनॉमिक्सच्या वेळी बघितलं तर हा इन्व्हेस्ट करतो आणि इन्व्हेस्टमेंटचा पैसा एक जागी जाऊन ब्लॉक होतो, म्हणजे घरच्या खर्चांसाठी जो सप्लाय ऑफ मनी गिव्हन टेक अँड गिव्हन होतो तो थांबलाय, एक जागी जाऊन तो पैसा ब्लॉक होतोय। हा ब्लॉक सप्लाय ऑफ मनीसाठी कंपोनेंट बनतो, डिटर्मिनंट बनतो। ओके, ह्याला म्हणतात मनी मल्टीप्लायर। ह्याचा त्याचा फायदा काय होतोय की ह्याचा लावलेला पैसा वेगाने वाढतोय ऍट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट या बेनिफिट अँड ऑल ऍज अ डिव्हिडंड ऍट अ मार्केट रेट वगैरे तो वाढतोय, पण कुठेतरी त्याची बेसिक अमाऊंट आहे ते ब्लॉक आहे जी त्याला रियूज करता येणार नाहीये। समजलंय का? ओके सर. हॅलो समजलंय? ओके सर. नेक्स्ट आदित्य काय विचारायचंय? हेलो सर. सर करन्सी रेशियो पॉइंट हे करा. करन्सी रेशो लिसन हियर. हां. करन्सी रेशो मध्ये आपण कसं डिस्कस करतो तर रेशोचे करन्सीचा एक्सचेंजचा जो रेट असतो हा असतो। आता करन्सी एक्सचेंजचा रेट जो तुमच्या टायमिंगला आहे तो डेली चेंज होतो, 2 टाइम्स होता। एक पिरियडिक होता तो टाइम पिरियड मध्ये होता, 6 महिन्याने 3 महिन्याने वार्षिक चेंज व्हायचा, ओल्ड पॅटर्न आहे। देन पुढे इट इज फ्लक्च्युएशन रेटिंग सिस्टीम आहे, हा कधीही चेंज होतो, रात्रीच्या पहाटे सकाळी 6 वाजता कधी ऍज पर द इंटरनॅशनल डॉलर रेट आहे चेंज, म्हणजे डॉलरच्या किमतीमध्ये होणारा चेंज जो रेट चेंज होतो। मग ह्या चेंजने होणारा इफेक्ट कोणावर होतो? सेव्हिंग वर होतो। कसं सेव्हिंग वर इफेक्ट होतो तर काय आहे की जर आपण डिसाइड केलं आज 50,000 ची एफडी करायची, 50,000 ची एफडी करायची आहे तर हे 50,000चं डॉलर रेट जेव्हा तुम्ही एफडी डिसाइड केला मे बी 50 रुपीज असेल, टुडेज तो 80 रुपीज झाले, तर तुम्हाला रिटर्न भेटताना तेवढेच 50,000 भेटतील का? नाही, 80च्या हिशोबाने तुम्हाला 50,000च्या कमी भेटलं। का कमी भेटलं? बिकॉज द करन्सी रेशो आज चेंज झालाय, आज तो करन्सीचा रेट नाही आहे आणि त्या रेट मुळे जो मला फॉरेन किंवा मला कुठे विदेशात फिरायला जायचं असेल त्या टायमिंगला मी जो विचार केला होता की फ्युचर मध्ये 50,000चे मी 1 लाख रुपये नाही तर 1 लाख रुपये घेऊन जातोय, पण तिकडच्या करन्सीच्या प्रमाणे मी कमी पैसे घेऊन जातो। तेच आधीच गेलो असतो जेव्हा 50 रुपीज डॉलर होता मी जास्त घेऊन गेलो असतो। समजलं का? हॅलो समजलंय का? हो सर हो सर. ठीक आहे विशाल तुला चालेल ना? साक्षी
First point. First point, which one? Monetary base. Monetary base हा मेन पॉइंट आहे. ह्याच्यामध्ये आपण बेस तयार करतो की आपल्या देशाची मनी पॉलिसी काय असते, मॉनिटरी पॉलिसी. मग रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरे हे जे आहे ते सर्व ह्याच्यामध्ये येणार. पण आधी जी इश्युइंग करन्सी पॅटर्न आहे तो कसा पाहिजे, आपल्या त्या रुपीला किती रेटिंग आली पाहिजे, विदेशाप्रमाणे एक्सचेंज रेट आपलं काय असलं पाहिजे, त्यानंतर त्याची व्हॅल्यू वाढेल कशी बघायची आहे, त्याची व्हॅल्यू घटता नाही आली पाहिजे, इन्फ्लेशन म्हणजे महागाई नाही झाली पाहिजे, ह्या गोष्टीवर आपण डिस्कस करतो. म्हणजे बेस तयार करतो की पैशाचं चलन जो आहे तो चलन कसं चाललं पाहिजे. आर यू गेटिंग? चलन चलन आपण मराठीमध्ये चलन करतो. समजलं का? हो सर. ओके, नेक्स्ट वन. अमय. सर रिझर्व रेशोच्या समोर सर यार आपण डी लिहिलंय ते काय एक्सप्लेन करा. यार अपॉन डी हा इकॉनॉमिक फॉर्म्युला आहे. इकॉनॉमिक रेट डिवायडेड बाय डिमांड ऑफ मनी. म्हणजे ती मनी ऑफ डिमांड किती आहे हे कशावर आहे, तर रिझर्व रेशोच्या अर्निंग रेटवर आहे. आर यू गेटिंग? तो फॉर्म्युला आहे कॅल्क्युलेशनचा. कॅल्क्युलेशन नाही येत तुम्हाला, पण यूज त्याने तुम्ही मेन्शन केलं होतं, तुम्ही दाखवलं. अरे काय विचारायचं त्याच्यावर? नाही सर. अक्षय सर. येस सर. सर रिझर्व रेशो एक्सप्लेन करा ना सर. रिझर्व रेशो. तर रिझर्व रेशो इथे रिझर्व रेशो असतो, इट इज युअर रिझर्व. आता रिझर्व कुठल्या प्रकारचे असतात की दोन प्रकारचे रिझर्व आहेत. एक बीपी, इट मीन्स सॉरी बीओपी लिहिलेले इथे, बॅलन्स ऑफ पेमेंट. आता बॅलन्स ऑफ पेमेंट कुठला असणार आहे, तो इंटरनॅशनल ट्रेडचा बॅलन्स ऑफ पेमेंट असतो. ते फॉरेन एक्सचेंज मध्ये जो रेटिंग करायचं. करन्सी रेशो आज 50 ने असेल, पुढे तो 80 ने झाला, तर मधला जो 30चा डिफरन्स आहे, हा 30चा डिफरन्स आहे, हा कसा कुठून फॉलो करायचा, त्याच्यासाठी आपण रिझर्व जनरेट करतो. आणि तो जो रिझर्व आहे हा किती इफेक्टेड होतो, इज डिपेंड ऑन दिस रेशो, इज कॉल्ड रिझर्व रेशो. आणि हा रिझर्व रेशो जर का रेट वाढलं तर हा रिझर्व रेशो वाढणार आहे. आणि जेवढा रिझर्व रेशो वाढेल तेवढी सप्लाय ऑफ मनी कमी असेल, कारण की तुमच्याकडे पैसा कमी असेल, तुम्हाला फॉरेनला तो पैसा पाठवायचा आहे ऍज अ पेमेंट. आर यू गेटिंग? समजलं का? येस सर. हो सर. ओके. सिनी कुछ पूछना है? नो सर. सुष्मिता. सुष्मिता. फुलून. नो सर. ओके. श्रुति. ओके, मी लेक्चर इथे लेफ्ट करतोय. 5 मिनिट्स मध्ये रिजॉईन व्हायचं ऑल ऑफ यू. 10 या 11 स्टुडंट इज देअर. मला पुन्हा 11च्या 11च पाहिजे.